In number 5. In question number 5, it is given that in a triangle ABC, angle B is equal to angle C. A triangle is given ABC triangle. In triangle ABC, angle B and angle C are equal. Okay. And we have to prove a lot of things. Chalo, given in triangle ABC, angle B is equal to angle C. To prove, first part, the perpendicular from the midpoint of BC to AB and AC are equal. Okay. The perpendiculars first. Perpendiculars from midpoint of BC to AB and AC are equal. Okay. Second, the perpendicular from B and C to opposite sides. Okay. There are two parts, the perpendicular from, okay, the perpendicular from B and C to opposite sides are equal. Okay, so why you people off your cameras? So अभी मैं इन लोगों को भेज देता हूँ, वो लोग जाके मजा करेंगे, गणपति विसर्जन है, एंजॉय. Okay, so we have two constructions. So already given that, see the statement को पहले समझ लो. The perpendicular from the midpoint of BC, तो BC का कोई midpoint है. Suppose उसको label देते हैं D, and because of that one BD and DC equal होते हैं. Okay. The perpendicular from midpoint of BC to AB and AC are equal. तो D से हमें क्या करना है, एक perpendicular draw करना है on AB और दूसरा perpendicular draw करना है AC. And these two perpendicular, whatever we drawn, suppose this is DE and this one is a DF. So these DE and DF are equally हमें prove करना है. Okay. हाँ, तो अभी कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा. ड्रॉ DE perpendicular to AB and DF perpendicular to AC. One more construction, but वो हम लोग बाद में करेंगे. Now proof. अच्छा, minimum 3 conditions are required to prove any triangle as a congruent. Correct? So first we have to prove that two triangles, whatever the two triangles at the base, कौन सा दिख रहा है, ये BDE एक दिख रहा है ये, and another is CDF. These two triangles जहाँ पे मैंने dot किया ये वाला, this one, these two triangles we have to prove as a congruent. So prove in triangle BDE and triangle CDF, and already it is given that BD is a midpoint of BC.
ये स्टेटमेंट में ही दिया था, मीन्स दैट इज गिवन. तो फर्स्ट वन मिनिमम 3 कंडीशंस वी वांट. तो फर्स्ट आएगा sec BD congruent to sec CD. This is given. Next part, see angle B and angle C is there. Already it is given. Given में दिया था. Angle B equal to angle C. This is also given. And one more part is 90 degree. 90 degree दिखा है? That is by construction. Angle BED congruent to angle CFD. Each 90 degree. So कौन सी टेस्ट हो गई? Therefore triangle BDE congruent to triangle CDF. Which test? Angle हो गया, angle, angle and side. Angle, angle, side by angle, angle, side test. Okay. If two triangles are congruent, their corresponding parts also congruent. So therefore sec DE congruent to sec DF. Corresponding parts of congruent triangle. Congruent हमें equal prove करना था. Therefore DE is equal to DF. So first part prove क्या बोला था? Perpendicular from midpoint of BC to AB and AC are equal. तो ये midpoint दोनों perpendicular थे, that we prove. Okay. Next part है perpendicular from B and C to the opposite sides are equal. अभी B और C से perpendicular draw करना है. Oh, so तो B से एक perpendicular जाएगा ऐसे, and C से जाएगा like this. So we will do one construction again. Construction. Draw BM perpendicular to AC and CN perpendicular to AP. So बहुत complicated diagram हो रही है. So we will draw एक और diagram बना लेते हैं rough. So this is A, this is B, this is C. Already B and C that is equal ये दोनों के लिए था. But जो मिड पॉइंट वाला था वो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के लिए था, सेकंड के लिए नहीं है. So keep in mind दोनों अलग अलग कंडीशन है. BM एक ड्रॉ किया, then CM. See downside now we have this triangle. अभी हमें इसको देखना है. This BM and this is CN. Again the diagram may be little bit confusion. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ना तोड़ते हैं डायग्राम को, छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं. तो एक आया ये BC, ये दूसरा आया BC, यहाँ पे आया BM, यहाँ पे आया this side one more और फिर यहाँ से. Okay, so these two triangles we have. This one is a BC, again this is BC, this is M, and this one is the N. This one 90, this one 90. Again, and we know that angle B, this B whole B and this whole C are equal. Okay, so कौन से triangle हो गए? In triangle BMC and triangle, अभी C से start करो, C and B. If you observe carefully, BC is present in both the triangle, first and second, दोनों में BC है. तो sec BC congruent to sec BC, that is common segment. Okay. 7. Angle B and angle C are equal. BMC में है क्या? No, BMC में angle C है. Angle C congruent to angle B. This is given. And 190 degree, that is by construction. Angle
BMC congruent to angle CNB, each 90 degree. Understood, Dheeraj? There, Yes, sir. triangle BMC congruent to triangle CNB by which test? C. Again 90 degree angle and side, 90 angle and Yes. yes, AAS. If triangles are congruent their parts, therefore sec BM congruent to sec CN, corresponding parts of congruent triangle. So therefore BM is equal to CN. Sum solved. Theorem proved. The perpendicular bisector of sides of a triangle ABC meet at I. Prove that IA, IB and IC are equal. Okay. So एक ही सम होगा इसके बाद, बस खत्म. Perpendicular bisectors of triangle ABC meet each other at I. Okay. एक मिनट ना, क्या बोला है? Perpendicular bisector of sides. अच्छा sides बोला है ना. From here, one. This one is of second, and this one third. Okay. So this is A. This is B. This is C. These are perpendicular bisector, means 90 degree है. These are meet each other at I. I में intersect करे, तो intersection point is I. So this P, Q and R. And these are equal. PB and PC are equal. QC and QA equal. And RA and RB equal. Because बोला है perpendicular bisectors of sides. So given in triangle ABC, क्या बाइसेक्ट कर रहा है? AP, PQ and CR are the perpendicular bisectors of side. AP किसका बाइसेक्टर है? BC का. BC. PQ किसका बाइसेक्टर है? AC. And AB respectively. Okay. Then and meet each other at I. I में इंटरसेक्ट मीट हो रहा है. तो टू प्रूव, क्या प्रूव करने को बोला है? AI ना? Yes, IA is equal to IB is equal to IC. These three we have to prove equal. कहाँ दिख रहा है? IA दिख रहा है. IA, IB, IC, ये तीनों इक्वल करने हैं. तो बहुत सिंपल है. जितना डायग्राम देख के डर लग गया होगा आधे लोगों को, तो इतना है नहीं, टेंशन मत लेना. सो क्या करते हैं ना, ट्रायंगल्स को पार्ट्स करते हैं. इसके पार्ट्स सिंपल हो जाता है. फिर एक मैंने ये लिया, देन यहाँ से ये आई है, देन फ्रॉम हियर अगेन आई एंड दिस वन इज अ परपेंडिकुलर. ऐसे दो दो ट्रायंगल ना तोड़ मरोड़ के लेते हैं. देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रूव. टाइम बच जाता है हमारा. आई दिख रहा है? ए आई बी, दिस वन, दिस इज पी, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज बाइसेक्टर, मींस ये पार्ट इक्वल है. हो गया ना? अभी प्रूव देखो. सर आ रहे ना? सर आ रहे. अच्छा आ रहे सॉरी, हो गया आ रहे. सो सी दिस टू ट्रायंगल दिख रहे हैं. दो ट्रायंगल को क्या करना है? वी हैव टू प्रूव एज अ कॉन्ग्रुएंट.
कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AIR एंड ट्रायंगल BIR, दिख रहे? AIR एंड BIR. तो AR एंड BR आर इक्वल, ये तो बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना. sec AR congruent to sec BR. This is given because perpendicular bisector दिया. Again 90 डिग्री भी है दोनों साइड में. Angle ARI congruent to angle BRI, each 90 degree. And third, common segment है देखो, RI. Yes, sec RI congruent to sec RI, common sec. अरे कैमरा बंद वाले, sec AIR. अच्छा, सेग नहीं आएगा, ट्रायंगल आएगा. कौन सी टेस्ट हो गई भाई? अरे सुमित तेली, AIR एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BIR. ये तो कसम मौन व्रत खाया है सुमित तेली ने. वो बोलता भी नहीं, दिखता भी नहीं. इज इनविजिबल. हाँ बोलो, कौन सी टेस्ट है बोलो. धीरज. ऐसे है। यस, देखो साइड है, इधर साइड, फिर एंगल और फिर साइड. सो दिस इज बाय SAS टेस्ट. अच्छा 90 डिग्री आएगा तो हर समय RHS नहीं होगा, कीप इन माइंड. ओके, तो फिफ्थ वन, इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर पार्ट, उसका पार्ट कौन सा है? sec IA congruent to sec IB, corresponding sides of congruent triangle, or you can write corresponding parts also. Therefore IA is equal to IB. Understood up to here? समझा क्या हरड? रात्री जागरण जास्त केलेलं दिसतंय. अरे गणपति है, बहुत जागरण किया, बहुत पत्ता खेला. कितना हरा रे. नहीं सर, पता नहीं चला, ऐसी बातें कर रहे. ओके चलो, अच्छी बात है, गुड. So see, this one is the second part जो लिया मैंने यहाँ से. Base one, that is BC. अथर्व गायकवाड़ है क्या भाई? यस सर। अभी भी लिख रहा है तू? See this triangle लिया, this PA PB नहीं, PB and PC are equal. This is 90 and again common. Same है, same procedure we have to follow. हमें same करना है इसमें भी. Two triangles we have to prove congruent. चलो बोलो, अभी तुम लोग बोलो यार, कोई तो बोलो. Anyone? इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लो बोलो. IPB and triangle IPC. ओके, IPB and triangle IPC. बोलो फर्स्ट पार्ट. BP equals to PC. हाँ, BP segment BP is congruent to segment PC. करेक्ट. sec BP congruent to sec CP. This is given. ओके, गिवन में हम लोग ने लिखा these are perpendicular bisector. Next, Angle IPB equals to angle IPC, each 90 degree. IPC each 90. अरे सिर्फ सानवी बोल रही है, बाकी लोग क्या है, सो गए क्या? नेक्स्ट, यस सानवी कंटिन्यू. IB equals to IB common side. Yes, seg IP congruent to seg IP, common seg. Ninth, therefore triangle IPB congruent to triangle IPC. कौन सी टेस्ट हो गया? अगेन सेम, साइड एंगल साइड. So 10th, therefore seg IB congruent to seg IC.
C. Corresponding parts of congruent triangle. So students, if you observe carefully, IB is equal to IC और यहाँ पे क्या था, IA is equal to IB. 5th और 10th देखो तो 11 में क्या होगा, therefore sec IA congruent to sec IB congruent to sec IC. ठीक है, फर्स्ट में क्या था, 5th में IA is equal to IB, 6th से IB is equal to IC means IA, IB and IC all are congruent from 5th and 10th. अगर कॉन्ग्रुएंट है मींस इक्वल भी होते, देयरफॉर IA is equal to IB is equal to IC. Sum solved.